नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने आजिर भिडियो आम अष्टम श्रेणी व्हिट एंड विजडम यूनिट रो एक कंक्रीट एग्जांपल चैप्टर रो क्वेश्चन आंसर करबा समस्त को हम यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रसून को स्वागत पिला माने आमे यार एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आमे प्रीवियस वीडियो रे करे सारी जे तो तुम माने जति देखिना हो तो यूट्यूब चैनल को जाके देखि परिबो तो देखो पिला माने ए एक्टिविटी माने मध्ये आमे सेठारे करिथिले किंतु आज आउ थरे करथबा तो रिपीट हे जबो देखो पिला माने कोन कहिचे किछटा पिक्चर देछि तार ना ऊपर लिखा है आमको मैच करार अच्छी तो फास्टा जब देखा कौन हम पिला माने फास्टा हूँ हैच नेक्स्ट एटा कौन पिला माने सेकेंड टी हूँ व्हील बरो है कौन हम पिला माने नंबर थ्री जब आम देखा थ्री गोटे कौन पिला माने सैपलिंग नंबर फोर जब देखा नंबर फोर हूँ कौन पिला माने फ्लावर बेड्स एवं नंबर फाइव हूँ कौन पिला माने फेन्स ठीक से जदि आम एपट साइड टी देखा प्रथमटा हूँ कौन पिला माने फ्लावर पॉट सेकेंडटा हूँ कौन पिला माने पीबल्स ठीक से जब थर्ड टी को देखा यहाँ हूँ कौन पिला माने ग्रीन हॉर्स थर्ड टी हूँ कौन पिला माने ग्रीन हॉर्स नंबर फोर दिस योर भाइन है नंबर फोर हूँ कौन पिला माने भाइन एवं नंबर फोर हूँ कौन पिला माने रॉकेरी है रॉक एवं प्लांट को लेकिन करा जाइतबा डिजाइन देख पिला माने एठारे यार मीनिंग माने मध्ये लिखा है तुम मैंने वीडियोटी को पॉज करके मीनिंग गुड़िक आउ थे पढ़ी नेब है नेक्स्ट क्वेश्चन देख कही कि ग्रुप करके आम गोटे क्वेश्चन भाविबा कि आमको के भाया गार्डन पसंद मु पूर्वर कही एवं कहे समस्त पसंद अलग अलग तो एटारे जो आंसरटा मुझे लिखी एवं ता पछर रिजन जहाँ लिखी से मतामत हूँ मोर निजस्व जदि तुम मान अन्य कौन प्रकार गार्डन पसंद तुमने मेंशन कर तो मो अनुसार आई वुड लाइक टू have a beautiful garden filled with colorful flowers such as marigold, sunflower and lavender मते फूल रे भर्ती हेतिबा कौन बगीचा बहुत पसंद फूल जेमती कि मैरीगोल्ड गेंडू फूल हो जाओ सूर्यमुखी फूल हो जाओ लैवेंडर हो जाओ है आउ कौन थी सेठारे इट आई ऑल्सो इंक्लूड ए स्मॉल फाउंटेन गोटे सेठारे गोटे स्मॉल फाउंटेन थी बेंच थी एवं बहुत सारा पीबल्स रास्ता होइथिबो द गार्डन वुड बी एनक्लोज्ड विथ ए वुडन फेंस चारिआडे गोटे काठर पाचेरी थी एंड डेकोरेटेड विथ स्टोन स्कल्पचर्स माने कौन स्टोन रो कारुकार्य भाया मूर्ति मैंने सब थी आई लव दिस टाइप ऑफ गार्डन बिकॉज इट वुड अट्रैक्ट द बटरफ्लाई एंड द बर्ड्स मेकिंग द स्पेस लाइवली एंड पीसफुल इट वुड बी ए परफेक्ट प्लेस टू रिलैक्स एंड एंजॉय द नेचर मत ये भाया गार्डन ये पसंद कारण जब गार्डन टा ठीक ये हो तो कौन हम पिला माने कि से जगह जीवंत लगे पक्षी आसुवे बटरफ्लाएस आसुवे एवं से मु रिलैक्स करी पारिबी नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन कही रीड द टाइटल ऑफ द पोएम पोएम र टाइटल टी कौन पिला माने कंक्रीट एग्जांपल व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द वर्ड कंक्रीट कंक्रीट पढ़ला माने तुम मन को कौन आसुची यार कौन मल्टीपल मीनिंग हो पारे कि तो तुमर आंसर को तुम कौन कर समस्त सहित कथा हुआ तुम टीचर मान सहित स्टूडेंट मान सहित डिस्कशन कर When I hear the word concrete, I think of a hard grey cement or building material. जेतेबेले आमे समस्त कंक्रीट रोड पढ़ीचे ला तो एटा प्रथमे सुनला मात्रे मो मन को कंक्रीट रोड रा कथा आसिला बट द वर्ड कैन आल्सो डिफरेंट मीनिंग एंड आई एम क्लियर रियल लाइक ए कंक्रीट एग्जांपल इन द लैंग्वेज एबे किंतु परे जानिली कि यार बहुत सारा मीनिंग अछि एबे मो क्लियर हैला आई एम क्लियर एंड रियल कि कंक्रीट एग्जांपल इन ए लैंग्वेज तो यस यार बहुत सारा मीनिंग अच्छी कौन जदि आम तार लिटराल मीनिंग टा देखा तो सीमेंट और स्टोन किंतु जदि तार फिगरेटिव मीनिंग देखा कौन स्पेसिफिक हो पार रियल हो पार डेफिनाइट हो पार तो दिस डबल मीनिंग ऑफ ए प्ले ऑन वर्ड्स और पॉन दिस मेक्स द ड्रीम दिस मेक्स द पोएम टाइटल इंटरेस्टिंग तो कौन यह पढ़ी द्वारा आम अट्रैक्ट हवा कौन पिला माने पोएम रो भितर को पढ़ाई आम मैंने आकर्षित हवा एबे देखो पिला माने आमे क्वेश्चन आंसर करबा एटा होचे लेट अस डिस्कस कंप्लीट द फॉलोइंग समरी विथ एग्जैक्ट वर्ड इन द पोएम तो हमको एठारे किछि देइचे आमे समरी टाको कोन एग्जैक्ट वर्ड को नेके करबा देखो पिला माने करबा द पोएम डिस्क्राइब मिसेस जोन्स द स्पीकर नेक्स्ट डोर नाइबर हु वाज अ यूनिक गार्डन फिल्ड विथ stones her garden include a peculiar path a pond and a rockery along with unusual sundial that she finds charming. Some Mrs. Jones plenty teeny delicate plants between the stone which speaker thinks most of so small that they are planted with a pin. One day Mrs. Jones invited the speaker to her garden see her garden and they discussed about a lovely flower that Mrs. Jones treasures.
When the speaker asks where the lovely flower is, Mrs. Jones says that the speaker is standing between on it all along. तो एटा पूरा स्टोरी लाइन कि तांकर राइटर एठारे स्पीकर एठारे कहा विषय कहते मिसेस जोन तांकर नेक्स्ट डोर नाइबर तांकर कौन थिला तांकर गोटे यूनिक गार्डन थिला जोटा फुल ऑफ स्टोन रे थिला हैला सेठारे गोटे कौन थिला गोटे पेक्युलियर पाथ थिला गोटे लिली पॉन्ड थिला हैला गोटे रॉकेरी रो किसी आइटम्स थिला एवं गोटे सनडायल कौन सूर्य घड़ी गोटे थिला जहाँ तांको बहुत आकर्षित लागुला है बहुत छोट छोट गछ सब स्टोन मान मझे रोला है तो राइटर भावुले से शायद गोटे पिन सहायतार प्लांट करुवे दिने मिसेस जोन्स डाकिले घर को से गोटे लवली गोटे बहुत सुंदर फुल विषय चर्चा कले है तो जिते चर्चा कले तो राइटर पचारे से सुंदर फुलटी कौटी तो मिसेस जोन कहले आपण ताऊपर छिड़ा माने से देखा एत छोट थिला कि राइटर ताऊपर छिड़ा तो देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने कोन दिछि कि टोन ऑफ द पोएम कोन कोन हेबो पिला माने देखो टोन ऑफ द पोएम हेबो मोकिंग हेबो अम्यूजिंग एवं लाइट हार्टेड ओके द स्पीकर ऑफ द पोएम किए एठारे स्पीकर पिला माने पोएट कहते मोर नेक्स्ट घर नाइबर मिसेस जोन राइमिंग देखो पिला माने एठारे गोटे क्वेश्चन अच्छे राइमिंग स्कीम तमे माने पोएम को जाई कि देखि पारिबो यार फर्स्ट वर्ड ए फर्स्ट लाइन रो लास्ट वर्ड एवं सेकंड लाइन रो लास्ट वर्ड राइमिंग होची ठीक से परि थर्ड लाइन रो लास्ट वर्ड एवं फोर्थ लाइन रो लास्ट वर्ड राइमिंग होची फिफ्थ लाइन रो लास्ट वर्ड एवं लास्ट लाइन रो लास्ट सिक्स्थ लाइन रो लास्ट वर्ड राइमिंग होची तो आमे यहाँ को राइमिंग स्कीम कौन हो गला ए बी बी सी सी तुम माने निश्चित भाव में पोएम को जाइए आउ थे पढ़िबो एवं देखिबो एवं मते कमेंट सेक्शन रे कहबो यह ए बी बी सी सी हेउची कि नहीं ओके पिला माने तो नेक्स्ट देखो complete the following sentence by choosing the correct answer given in the bracket तो हमको एठारे कोन देछि ब्रैकेट भीतर किछि आंसर देछि हमको कोन करबा को पड़िबो पिला माने ताको चूज करबा को ठीक आंसर को चूज करबा को पड़िबो देखो the poet uses the word stone in all stanza in order to emphasize her obsession with the stony garden कहीं से सबुठारे स्टोन रे कहिजंती कारण से मिसेस जोन्स जे तांकर नाइबर से गोटे स्टोनी गार्डन ऑब्सेस थिले भल लागुतला तांको द पोएट यूजेस इमेजिनरी टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द गार्डन दैट हेल्प द रीडर विजुअलाइज द गार्डन पिक्युलियर नेचर काहे के से बारंबार सब जगह इमेजिनरी जिनिस सब हमको कहिचंती कारण आमे से जिनिसटा को इमेजिन करके देखि परिबा एवं आम पई सेटा बेसी फ्रेंडली हे परिबो तो देखो नेक्स्ट आईवी क्वेश्चन कोन कहिजी आइडेंटिफाई दैट लाइन रिपीटेड इन द पोएम इन ईच स्टैंजा को लाइन टा बेसी रिपीटेड हिची पिला माने माय नेक्स्ट डोर नाइबर मिसेस जोन्स ए लाइन टा ही बेसी कोन हिची रिपीटेड हिची नेक्स्ट देखो हमको कहिची स्टैंजा 1 रे कोन कहिची देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन दिस पोएम सम लेटर्स आर साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड एंड दैट आर क्लोज टुगेदर आइडेंटिफाई दोस वर्ड एंड फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम एंड गिव एग्जांपल तो कोन देख पिला माने जदि आम स्टांजा 1 देखिबा एटारे गार्डन अच्छे जी एवं लास्ट रे अच्छे कोन गॉट लाइन 2 रे अच्छे द रिपीटेशन ऑफ जी साउंड हैला ठीक से पर लाइन 5 रे सनडायल अच्छे एवं स्ट्रेंज अच्छे रिपीटेशन ऑफ एस साउंड हैला स्टांजा 2 कथा जदि देखिबी फ्रूट्स अच्छे एवं प्लांट्स अच्छे रिपीटेशन ऑफ पी हैला लाइन 8 रे सो अच्छे एवं स्मॉल अच्छे रिपीटेशन ऑफ एस साउंड हैला प्लांट्स अच्छे एवं पीन अच्छे हैला तो रिपीटेशन ऑफ पी साउंड हैला ठीक से पर स्टोर्ड अच्छे एवं स्टोन्स अच्छे the repetition of st sound हला देखो एटारे पूरा s खाली ने st sound रिपीट हला ठीक से पर एटारे देखो क्वाइट qu एवं क्वार्टर qu हला ए गुडी कर मते रिपीटेशन हला एटारे मु केते नंबर लाइन रे अछि मेते मेंशन करा हिची त माने पोएम को जाई कि आउथरे चेक करि नेबो Mrs. Joan excitement about her garden contrast with the speaker disappointment or how ordinary it is find out the line which explain this माने कोन मिसेस जोन्स तांकर गार्डन को लेकिन ओवर एक्साइटेड थिले हैला एंड कॉन्ट्राक्ट विथ द स्पीकर डिसअपॉइंटमेंट किंतु जे राइटर अछंती जे स्पीकर अछंती से कोन डिसअपॉइंट थिले एहा में क्यों लाइन की देखि कि जानु छे कोन वेयर इज दिस लवली थिंग्स आई क्राइड तो से आश्चर्य हो गले कि कोठारे ए लवली जिंस अछि यू आर स्टैंडिंग ऑन इट सी रिप्लाइड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आयरनी ए लिटरली डिवाइस माने देखो पिला माने से स्पीकर कोन करछंती पिले
स्पीकर को से डाकी कि मिसेस जोन्स के आस गोटे बहुत सुंदर जिनस देखिबो किंतु से डिसअपॉइंट है कि कोठी से फुल बोली पचारुचंती 15 मिनिट रा डिस्कशन परे तो से निश्चित भाव में डिसअपॉइंट होचंती एवं से जो एक्साइटेड थिले तांकर गार्डन को लेके से जिनसटा मते एठार जणा पडुची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पिला माने कोन कहिची कंप्लीट द सेंटेंस एठारे मते हमको सेंटेंस देछि एवं तार मीनिंग तार एप्रोप्रिएट वर्ड को लेके हम एठारे लिखिबा कौन हम पिला माने जदि आंसर देखिबा the word odd concrete refer to the word concrete refer to कौन थिला पिला माने concrete in misses कौन हम concrete रो अर्थ specific। The title has a symbolic meanings as the poem provide clear concrete example Mrs. Jones Dex gardening habit peculiar gardening habit ହେଲା ପିଲା ମାନେ next ଦେଖ the title a concrete example carries both literal and symbolic meaning. Some sentences have the word with the multiple meaning or words sound alike but have different meaning creating humorous effect माने कौन कही पिला माने देखो किछिटा एमती शब्द थाए जहाँ देखा जाए समान किंतु से मानकर मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट थाए। अरे एटा तो वर्ड जदि आमे हम ओडिया साहित्य को जिबा हम ओडिया साहित्य रे जदि तुम माने अनुमान करबो केबे उपेंद्र भंजकर किछि कविता जदि तुम पढिबो त लाइन गोटिए थाए तार लाइन रो मीनिंग अन्य अन्य थाए ହେଲା ତମାନେ ଅନୁମାନ କେତେବେଳେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କବିତାବଳୀ ପଢ଼ିବ ତୁମର ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କରେ ବୋଧେ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେଇଟାର ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ତାଙ୍କର ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ଏତେ ଉନ୍ନତ ଲେଖନ ଶୈଳୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡର ଡବଲ ଡବଲ ମିନିଂ ଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଏ ବାଇସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ବିକଜ ଇଟ୍ସ ଟୁ ଟାୟାର୍ଡ ତ ଏଠାରେ टू टायर्ड साउंड लाइक टू टायर्ड दैट मीन्स वेरी एग्जॉस्टेड देख एठारे ई टू टायर्ड पढ़िला बेले को हमको टू टायर्ड वाली मते आमे अनुभव करि पारू। द लाइब्रेरियन इज ऑलरेडी बुक्ड सिंस दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय बुक सो दे आर बुक्ड हैला तो बुक्ड जदि जने कहबो खाली तो आमे गोटे जिंस बुक करबा मध्य कहू हैला किंतु एटारे को सेंस रे कह जाय छै कारण लाइब्रेरियन सब बेले बही मानक द्वारा सराउंडेड हेकि थाए। वी हैड a pawn contest in class but it was punishment to read them all when pawn is a joke using wordplay which can be unpleasant or painful हैला तो देख पिला माने तो से माने कोन करथिले सेटारे गोटे पोन होची कोन पिला माने पोन होची गोटे जोक हैला वर्ड प्ले को नेकी माने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड मान को आमे यूज करबा जोटा ह्यूमरस थिबा लोक मान को हसेइबो हैला किंतु केते बेले सेटा अधिक होई गेला बेले कोन होची which can be unpleasant or painful let us think and reflect देख पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन देछि पिला माने लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट रे गोटे एक्सट्रैक्ट देछि माने गोटे सेक्शन देछि ताकू ने के आंसर लिखिबा माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स हैज गॉट ए गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स ए क्रेजी पाथ एंड ए लिली पॉन्ड ए रोकेरी एंड जस्ट बियॉन्ड ए sundial with a strange device which Mrs. John thinks nice देखो पिला माने से ए बी बी सी एट रे एग्जांपल मिलु गला देखो कहि दोछि ए दुई जनकर कोन राइमिंग वर्ड समान तो ए माने हेले ए देख ए माने मध्य हेजिबे सेमती बी बी एवं यार सी नाइस नाइस डिवाइस नाइस तो सी ए भली भाबरे सेटारे आमे कोन बनेथिले राइमिंग वर्ड बनेथिले तो याकु नै कि एबे आमे कोन करबा क्वेश्चंस गुडी कर आंसर लिखिबा। प्रथम क्वेश्चन कोन कहिछि पिला माने what do you think about Mrs. Jones' taste in gardening from the description of her garden being full of stones तो तमे जते बेले मिसेस जोन्स कर क्यों गार्डनिंग स्किल कथा तुम माने बुझी पारुछ जते बेले से स्टोन को नेके गार्डन तैयारी करथिले। Mrs. John has an unconventional, creative and rustic taste in gardening. Instead of a traditional garden filled with only plants and flowers, she prefers natural structured elements like rocks, rockery and stone path. माने गोटे ट्रेडिशनल मेथड माने कोन जानि जे गार्डन माने सेटर जरूर ही जरूर गछ थिबो किंतु से किछि डिफरेंट करबा को चेष्टा करिसंती स्टोन माध्यम रे से करबा को चेष्टा करिसंती। नेक्स्ट what do you identify whether the following statement is true or false? The gardener served as means to removal of Mrs. John herself. The garden served as means to reveal more about Mrs. John herself. The statement is true. ହେଲା ପିଲା ମାନେ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि व्हाट डू यू मीन बाय क्रेजी पाथ तमे क्रेजी पाथ कहिले कोन बुझ ए क्रेजी पाथ often called a crazy paving refers to a garden walkway made from the irregular randomly shaped flat stone
fitted together rather than straight uniform bricks or tiles माने जेमती समान भलिया देखा जाउतबा ब्रिक हैला इटा हैला किबा टाइल यूज न हे कि किछि भी पत्थर किछि भी स्टाइल रे सेटा को अरेंज हेतिबा को हमें कोन को पिला माने क्रेजी पाथ बोली को नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द sundial of a strange device suggest about Mrs. Jones personality she has a fascinations with unusual atom माने कोन एटा ए स्टेटमेंट ता प्रथम रु ठीक लागुची संडाइल को से यूनिक बोली काहे के कुआ जाय छे कारण तांकर अनयूजुअल आइटम सहित से फैसिनेटेड थिले तांको भल लागुतिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पिला माने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हाउ डू मिसेस जोन फील्स अबाउट हर गार्डन सपोर्ट योर आंसर विद द एग्जांपल इन द पोएम देखो मिसेस जोन फील एक्सट्रीमली प्राउड पैशनेट एंड fond of her garden she views it as a masterpiece of beauty and uniqueness even though it is unconventional. Example from the poem, she spends a long time explaining and praising the features of a single teeny delicate flower growing along the stone. माने से तांको गार्डन को नेकी बहुत खुशी थिले बहुत एमती बहुत हैप्पी थिले कारण से भाबुतिले इट इज ए मास्टरपीस ऑफ ब्यूटी और यूनिकनेस माने एटा गोटे सुंदरता एवं यूनिकनेस रो एटा होची गोटे गंता घर हैला आ से कोन करूतिले एग्जांपल कोटे कारण गोटे एमती गोटे फूल विषय से चर्चा करूतिले जहा राइटर को खाली आखि को देखा मध्य गला नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहै छी why do you think the speaker described the plant being so small that they could be planted with a pin काहे कि कहि चंते स्पीकर के से एमती भलिया गछ तयारी करूतिले जहा को से गोटे पिन सहायता में भी लगै थाई पारन The speaker described the plants this way to emphasize their extreme delicacy, minuteness, and fragile nature. It highlighted how microscopic and fragile the vegetation is compared to the traditional garden, while also underscoring the incredibly careful, steady-handed effort required from Mrs. Jones to nurture them. माने कौन ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ହଟକେ କଣ ବନେଇଥିଲେ ସେ ହଟକେ ଗାର୍ଡେନ ବନେଇଥିଲେ ସେହି ଗାର୍ଡେନ ରେ ସେ କେମିତି ଭାବରେ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଥିବେ ଏବଂ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛକୁ ସେ ପିନ୍ ରେ ଲଗେଇଥିବେ ମେ ବି ବୋଲି ରାଇଟର କହିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 3 ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ଗେଟ୍ ଟୁ नो अबाउट मिसेस जोन बेस्ड ऑन गार्डनिंग स्टाइल एंड आर इंटेंशन विथ द स्पीकर तो तमे मिसेस जोन्स कर कैरेक्टर रे कोन जानिबा को पाइलो कोन को विषय तांकर गार्डनिंग स्टाइल को नेकी एवं तांकर स्पीकर का सहित interaction को नेकी based on her gardening style and interaction we learn that Mrs. Jones is से के भଳି हेतिबे careful and patient से निश्चित भाबरे बहुत careful थिबे she spends immense effort to caring for teeny details that other might be easily miss लोक माने जो जिंस इजिली मिस कर देबे सेही भଳି जिंस को नेकी से कोन थिबे बहुत सतर्क थिबे आउ कोन हेतिबा पिले अनकॉमन एंड क्रिएटिव से बहुत क्रिएटिव इट She rejects traditional lawns and finds beauty in unconventional material like stone, pebbles and a rockery. से पत्थर को नहीं कि मध्य से सुंदर देखी पारे चंती कहते ना पिला माने दृष्टिकोण नजर को बदलो नजरिया बदल जाएंगी चाहत को बदलो सितारे बदल जाएंगी कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है रे दोस्त दिशा को बदलो जिंदगी बदल जाएंगे माने कौन आमे हमर देखिबार नजर को जदि बदलै देबा तो नजरिया मध्य बदली जिवो तुमको फूल भल लागु थाई पारे किंतु से स्टोन रे मध्य ताको गार्डन टी को से बहुत अट्रैक्टिव करि पारे चंती हला पिला माने प्राउड येट जेंटल से बहुत प्राउड थिले She is enthusiastic about sharing her passion with her neighbor, displaying her deep commitment to her personal artistic vision. माने से कोन तांकर नाइबर माननकु से केते आर्टिस्टिक से जिनिसटी को शो करिबा को मध्य चाहुतिले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द पोएम पोर्ट्रेट मिसेस जोन्स in a positive light by highlighting her warmth, deep passion, and remarkable patience. Instead of presenting her as a foolish, the light-hearted narrative celebrates her ability to find joy, purpose, and profound beauty in simple, overlooked things. Her dedication turns a patch of the stone into a genuine labor of love. माने कौन से गोटे बहुत हार्डवर्किंग महिला थिले तांको आमे जरे पत्थर रे गोटे गार्डन बनै देछि याकू नै कि ताको फुल करके देखा है नै तांको देखा कि भଳି भाबरे हिची गोटे आर्टिस्ट हिसाब रे देखा हिची हैला तो कण कलाकार रो बस हाथ रे जीवन थिबा कथा माने कलाकार हाथ रे कलार दम थिबा कथा से कलार दम रे ही तो गोटे पत्थर को मध्य समय भगवान को रूप देकी लोक मान को तारा पूजित करि पारुचंती तो से कला
गुणटा क्या पाखे थिला मिसेस जोन्स को पाखे थिला बोली स्पीकर कहिसंती। द पोएम देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कौन पिला माने व्हाट डज द पोएम टेल्स अस अबाउट द वे पीपल थिंक डिफरेंटली फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। जो जिनसटा एबे मु तमन को कहूतिली आम चारिपटरे थिबा लोक माने पृथ्वी को नेकी अन्य केमती भाबंती। द पोएम डेमोन्स्ट्रेट दैट द ब्यूटी एंड वर्थ आर entirely subjective, while an ordinary observer or the speaker might see nothing more than a pile of hard rock, gravel, and invisible plant. Mrs. Jones see a magnificent organized sanctuary. It highlighted that the individual background and sensibility causes people to perceive, value, and appreciate the world around them in completely unique way. माने कौन जेमते कहली नजर को बदलो नजरिया बदल जाएंगे है तो तुम माने ସେଇଠାରେ ତୁମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ପଥର ଦିଶୁଥାଇପାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଗୁଣର ମହିମା ବୋଲିକି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛ କେବେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭକୁ ନେଇକି ବିଚାର କରିବାଟା ଭୁଲ। ତମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। let us appropriate word from the bracket and correctly replace the underlined word and sentence from the टेक्स्ट। तो आम एटा वर्ड लिखाई तार मीनिंग ए भितर कौटा है आम लिखा चेष्टा करवा पे। तो देख ए सनडायल विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस तो कौन हम पेक्युलर है स्ट्रेंज डिवाइस कौन पेक्युलर व्हिच मिसेस जोन थिंक्स रादर नाइस माने कौन प्लीजेंट दे आर सो डेलिकेट डेलिकेट अर्थ कौन पे मैंने फ्रैगल व्हेट डिड द लवली थिंग आई क्राइड एक्सक्लेम्ड है कोट इज ए लवली थिंग तो एक्सक्लेम्ड हो जाइछंती। द सनडायल रिफर टू ए डिवाइस in the poem you work in pair infer the meaning of the device share your thought with your classmate and your teacher। तो देखा पिला माने डिवाइस रो मीनिंग कौन तुम्हें तुम सांग मान सहित डिस्कसन कर ना। मेज देख कलम 1 देछि कलम 2 देछि कलम 3 देछि हैला कलम 1 रे कोन देछि नो मैच द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एटारे अछि टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कलम 2 रे कोन अछि पिला माने with their definition कलम 2 रे अछि डेफिनेशन एवं कलम 3 रे अछि कोन से मानकर एग्जांपल ताको आमे मैच करिबा। तो देखो इम्प्लीमेंट कहले कोन पिला माने इम्प्लीमेंट कहले होचे समथिंग दैट वर्क ऑन बीइंग मूव्ड बाय हैंड जाको आमे हाथ रे यूज करि पारो कोन कोन हबो स्पेड हेबो नाइफ हेबो एक्स हेबो सिकल दा हेबो छुरी हेबो हैला पिला माने कोन करत हेबो टूल कौन पिला माने समथिंग यूज्ड बाय हैंड टू मेक रिपेयर जहाँ रिपेयर करने को चेष्टा करा जाए कौन हेबो हैमर हेबो हातुड़ी स्क्रू ड्राइवर हेबो रेंच हेबो हैला पिला माने इक्विपमेंट कौन ए सेट ऑफ नेसेसरी आइटम्स फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज माने कौन गोटे पर्टिकुलर काम पाई व्यवहार होतबा जिंस सबको इक्विपमेंट कह जाए जथा क्रिकेट बोर्ड हेबो हेलमेट हेबो बैटिंग ग्लोव्स हेबो हाइकिंग बोर्ड्स हेबो कंपेयरिंग टेंट हेबो हैला पिला माने ठीक से परी एप्लायंस कौन है समथिंग दैट इलेक्ट्रिकल एंड इट इज यूज वर्क इन द हाउस कौन एप्लायंसेस अर्थ कौन घरे व्यवहार होता इलेक्ट्रिकल गैजेट मिक्सर ग्राइंडर हो तुम रेफ्रिजरेटर फ्रिज हो वाशिंग मशीन हो गैजेट कौन समथिंग दैट आर स्मॉल दैट कैन बी मेकानिकल और इलेक्ट्रोनिक जेमती मोबाइल फोन है लैपटॉप है स्मार्ट वॉच है वायरलेस इयरबड्स है ये मैंने सब हे गोटे गोटे गैजेट। Complete the table by making new word in the column 1 using the hint in the column 2 एठारे देछि किछि मीनिंग ताको हमें column 1 रे लिखिबा। Replace the first letter of the word given to create new word तो गोटे यार फर्स्ट वर्ड लेटर टा ही चेंज हेबो जेमति एटारे अछि नाइस एहा हैला डाइस ठीक देखो सेही परी एटारे मध्ये सॉइल ताको हमें लिखिबा तो काना कोन हबो ग्रेन्स दैट वी कुक तो कोन हबो राइस प्लुराल ऑफ माउस माइस बैड हैबिट कहले कोन पिला माने भाइस सेटा कोन दिला नाइस हैला देखो स्टिक से परी सेटा छला सॉइल सॉइल रे कोन हबो हीट समथिंग हीट करबा को कोन कहै पिले बॉयल वर्क वेरी हार्ड काम करबा को कोन कहै टॉयल लेंथ ऑफ द वायर इन ए सर्किल ताको कोन कहै कॉइल हैला तापर देखो सीड्स टू रैप फूड फूड को रैप करबा को कोन कहै फॉइल हैला पिला माने। Let us listen. You will listen a presentation about the wonderful rock garden in Chandigarh. As you listen, answer the following question using 3 exact word from the presentation. है तो देख पिला माने कोठारे अछि चंडीगढ़ रे गोटे नेकचांद कर गोटे स्टोन गार्डन अछि है तो ताको आमे कोन करबा तार आंसर आमे लिखिबा।
Transcript ଦେଇଛି କ'ଣ hello everyone, the rock garden is a spacious open air exhibition. It is the proof of human creativity from waste material. This garden was created by Nekchan in 1957. This is the reason of the garden is also known as Nekchan's rock garden. The garden was featured an Indian postage stamp in 1983 and Nekchan was awarded the Padma Shri a year later. तो ତମାନେ ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ 5 ରେ ବୋଧେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଥିଲା SST ରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଥିଲା ଭଳିଆ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ନେକ୍ଚାନ୍ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ ବନେଇଥିଲେ 1957ରେ, ସେଠାରେ 1983ର ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ପର ବର୍ଷ ନେକ୍ଚାନ୍ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ ଇଜ ସ୍ପେସିୟସ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଏ ମାସିଭ୍ 40-acre wonderland. Do you know why I say this? Well, it is because the several colorful sculptures and mosaic of art piece। ତ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଟା 40 ଏକରର ଗୋଟେ ଜାଗା ଯୋଉଟାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ପଥରରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି। What is the unique about rock garden is that is divided into 3 distinct phases. Each area reveals unique collection of installation including terracotta pot, light fixtures and even broken toilet pot that never have been transformed into extraordinary masterpiece। ତ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ତିନିଟା ଭାଗରେ ତିନିଟା distinct ଫେଜ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟିରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁଥିରେ ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍, କେଉଁଠାରେ ଟେରାକୋଟା ପଟ୍ ଅଛି, ଲାଇଟ୍ ଫିକ୍ସଚର ଅଛି, ଇଭେନ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ପଟ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛି। You will be surprised, ତମେ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଯିବ that the border of the rock garden are lined around 5000 statue। ମାନେ ତାର ବୋର୍ଡରରେ can you imagine ତାର ବୋର୍ଡରରେ 5000 statue ଅଛି। The rock garden is truly place that the celebrate of the best from waste। ମାନେ ଏଇଟା best from waste ର ଗୋଟେ brand example। I sincerely recommend you visit the extraordinary natural treasure। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ recommend କରୁଛି ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଲି ଯାଅ। Questions କ'ଣ? Where did Nekchan's rock garden featured? କେଉଁଠାରେ ଅଛି? Indian postage stamp ସେଇଟାରେ ଅଛି। What kind of sculptures does the rock garden have? କେଉଁ ଭଳିଆ ତା ପାଖରେ sculptures ଥିଲା? Colorful sculptures ଅଛି। How did the rock garden divided? କେତେ phase ରେ divide ହେଇଛି? 3 distinct phase। Name any one of the things that been transferred into a piece of art in the rock garden। କ'ଣ? Terracotta pot, light fixture or broken toilet pot। Approximately how many statues border the rock garden? Around 5000। Next ଦେଖ ପିଲାମାନେ the speaker of the poem might have felt sorry for stepping Mrs. Jones flower। ହେଲା ତ ଯେତେବେଳେ ତମମାନେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କର ତମେ କେମିତି ରିଗ୍ରେଟ୍ କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତମେ କେମିତି ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସକୁ କେମିତି କ'ଣ କର ପିଲାମାନେ ଆପୋଲୋଜାଇଜ୍ କେମିତି କ୍ଷମା ମାଗ। ଟେକ୍ ୟୁର ଟର୍ନ। ତ ତମମାନେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କରିଛ ତ ତମମାନେ କେମିତି କ୍ଷମା ମାଗ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଇଟେନ୍ ୟୁର ବ୍ରଦର ସେୟାର ଅଫ୍ ସ୍ୱିଟ୍। ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ ତୁମ ଭାଇର ସେୟାରକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛ ଖାଇ ଦେଇଛ। ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ସରି ଆବାଉଟ୍ ଇଟିଂ ୟୁର ସ୍ୱିଟ୍ସ। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତୋର ଖାଇ ଦେଇକି। ଆଇ ଜଷ୍ଟ କୁଡ୍ ନଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ। ହେଲା ତାପରେ ଯଦି କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ତ ସେ କ'ଣ କହିବ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ଜଷ୍ଟ ମେକ୍ ସିଓର ୟୁ ସେୟାର ୟୁର ୱିଥ୍ ମି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ତ କ'ଣ ତ କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଥର ଯେମିତି ତୁ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରି ଖାଇବୁ। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ୟୁର ସିଷ୍ଟର ଫ୍ଲାୱାର କ୍ରାଫ୍ଟ। ତମେ କ'ଣ କରିଛ ତୁମ ଭଉଣୀର କ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛ। ତାକୁ କେମିତି କ୍ଷମା ମାଗିବ? ପ୍ଲିଜ୍ ଫରଗିଭ୍ ମି ଫର୍ ବ୍ରେକିଂ ୟୁର ଫ୍ଲାୱାର କ୍ରାଫ୍ଟ। ମୋତେ ତୋର କ'ଣ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ତୋର ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ତୁମ ଭଉଣୀ ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ଦେବେ? ଦିଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହ୍ୟାପେନ୍। ଆରେ ଏମିତି ହୁଏ। ତ ଲେଟ୍ସ ସି ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗ୍ଲୁ ଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁଗେଦର। ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ଲୁ ଲଗାଇ ପାରିବା। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ସ୍ପିଲ୍ଡ ଇଙ୍କ ଅନ୍ ୟୁର ମଦର୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ମାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସପୋଜ ତମେ ତାପରେ କ'ଣ କରିଛ ଇଙ୍କ ପକାଇ ଦେଇଛ। ସରି ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ ଟୁ ସ୍ପିଲ୍। ସରି ମା ମୁଁ ସେଠାରେ ଯାହା ପକାଇବାକୁ ନଥିଲି। ରେସ୍ପନ୍ସ ଏହା ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଡିଲ୍ ନୁହଁ। ହେଲେ ଲକିଲି ମୋର ପାଖରେ ଏହାର ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଅଛି। ୟୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟୁ ଫରଗଟ୍ ୟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ୟୁର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନୋଟବୁକ୍ ଫ୍ରମ୍ ସ୍କୁଲ। ତମ ସାଙ୍ଗର କ'ଣ ନୋଟବୁକ୍ଟାକୁ ତୁମେ ଆଣିନାହଁ। ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଆବାଉଟ୍ ଦ ଫରଗେଟିଂ ୟୁର ନୋଟବୁକ୍ ଟୁଡେ। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଇ ଲେଫ୍ଟ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଅନ୍ ମାଇ ଡେସ୍କ। ଆରେ ମୁଁ ତା ମୋ ଡେସ୍କରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଇଟ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଟୁମରୋ ଏନିୱେ। ତ ସାଙ୍ଗ ବି କହିବ କ'ଣ ଆରେ ତାହା ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। When you apologize to someone authority like a principal or a teacher in a formal setting, we use in formal language। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଯଦି କ୍ଷମା ମାଗିବା ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖିବା। ହେଲା ତ ଟର୍ନ ୟୋର
work in pair and take turn to apologize for the following situation and respond to the apology। तो तमे कौन कर पिला माने you did not bring an assignment। तमे जदि assignment आनी ना हो, you were late for the school past 3 days। तमे 3 दिन है स्कूल को आसी ना हो, you did not submit your project word when asked to explain। you may use these phrases। तो कौन तमे से टाइम रे ए भली phrases यूज करी पारिबो। I am extremely sorry for, I promise it won't happen again, I owe you an apology for ହେଲା पिला माने I really regret ହେଲା। देखो द मिसिंग एन असाइनमेंट जदि असाइनमेंट आम करवा तो कौन लिखा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर नॉट ब्रिंगिंग माय असाइनमेंट टुडे आई प्रॉमिस इट वोंट हैपन अगेन एटा हेबो। टीचर कौन कहे आई एक्सेप्ट योर एपोलॉजी प्लीज एनश्योर यू ब्रिंग इट टुमारो नेक्स्ट मॉर्निंग विदाउट फेल है। लेट फॉर द स्कूल जदि स्कूल को 3 दिन आसी ना सेटारे कौन लिखा आई ओए यू एन अपोलॉजी फॉर बीइंग लेट टू स्कूल फॉर द पास्ट 3 days आई विल डू माय बेस्ट नॉट टू रिपीट इट। मु चेष्टा करी जेमती ए भलिया भूल न हुए। The principal, I appreciate your saying things, but punctuality is very important. Please make sure you leave home earlier। तो कौन बाकी punctuality रा गोटे अलगा ये डेफिनेशन अच्छी। तो तमें कौन कर जमती आउ एमती भूल केबे न हुए। मिसिंग प्रोजेक्ट वर्क तो कौन हम आई रियली रिग्रेट not submitting my project work on time। I assure you that this will never happen again। आउ एमती केबे हेबो नै सर मु निश्चित ही देवी। टीचर कहबे कौन आई एम ग्लाड टू रियलाइज मु बहुत खुशी हेली तू तोर मिस्टेक को बुझी पारिलु। तो मते कौन प्लीज हेड इट बाय द एंड ऑफ द डे मते दिन कौन आज लास्ट जाए मते दे देबु हैला। लेट अस राइट यू आर मेंबर ऑफ ए तुम स्कूल गोटे नेचर क्लब अच्छे तुम्हें सेठार गोटे मेंबर। तो तुम गोटे कौन कर नोटिस लेख गार्डन इनागोरेशन है हर्ब गार्डन इनागोरेशन कौन मेंशन कर तार राइटिंग तार पर्पज ऑफ राइटिंग है कहीं लिखुच डेट टाइम भेन्यू आउ अन्य सब इनफॉरमेशन है क्या लोक मैंने कंटाक्ट करेंगे केते केमती हेबो ए भली गोटे फॉर्मल लेटर तुम्हें लेख है पे देख तो कौन लिखा गवर्नमेंट यूपी स्कूल संबलपुर मुझे गोटे नॉर्मल नहीं जाइए संबलपुर नोटिस August 24 2026 inauguration of herb garden। this is to inform all the students of grade 6 to 8 that the nature club is inaugurating the school new herb garden। the garden features medicinal and aromatic plant like aloe vera mint carom and holy basil। the event aims to raise awareness about biodiversity and traditional herbal remedies। the inauguration details तो एठारे डिटेल्स मध्य दे देबो कोन डेट लिखि देबो August 28 time 10 am to 11:30 am venue school backyard adjacent site of the science lab ର site टा हैला। the principal will formally open the garden followed by the brief guided tour led by our club member। interested students should gather at the venue directly after the first period। for further information queries please contact undersign। कहा संगे तुम contact करिबो अभिमिश्र मेंबर नेचर क्लब हैला पिला माने एटा थिला पिला माने तुम मानकर क्वेश्चंस आंसर ए कंक्रीट एग्जांपल। आशा करछि वीडियोटी तुम मानको निहाती भल लागितिबो इनफॉर्मेटिव इबो तुम मानको पई। तो भल लागितिले वीडियोटी को लाइक करि देबो ए तुम सांग मानक सहित शेयर करि देबो एवं हम YouTube चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबो। धन्यवाद।